हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल एनलाइटन क्यूरोसिटी। आज मैं आपके लिए इंग्लिश भारती का जो हमारा यूनिट 2 रहता है उसका फर्स्ट लेसन जो है हमारा टर्शियरी कंपेयर अ प्रोग्राम और जो हमारा 3.3 क्रो इन द हाउस उसका एक्सप्लेनेशन में लेके आया हूँ। टर्शियरी और कंपेयर अ प्रोग्राम वो एक एक्टिविटी टाइप और टर्शियरी एक पोएम है, तो वो आप खुद कर सकते हैं। बट जो ये क्रो इन द हाउस का लेसन है वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा जो ये लेसन है इसमें हम लोग को बताया जा रहा है, जो ऑथर है इधर दिया गया है रस्किन बॉन्ड, वो उसने दिखाया गया है उसके जो ग्रैंडफादर थे और वो ग्रैंडमदर थे, वो कैसे पेट्स उसके ग्रैंडफादर पेट्स को लव करते थे और उनको एक रास्ते पे कौवा मिला। तो उसके बाद की स्टोरी मैं आपको समझा दूंगा। द यंग क्रो हैड फॉलन फ्रॉम इट्स नेस्ट एंड वॉज फ्लटरिंग अबाउट ऑन द रोड in danger of being crushed by a cart or a tonga or seized by a cat. When I picked it up and brought it home, it was in a sorry condition, beak gaping and head dropping, and we did not expect it to live. But grandfather, prising its beak gently open with a pencil, pushing in a little bread and milk, and then removing the pencil to allow it to swallow. We varied this diet We varied this diet with occasional doses of grandmother's homemade plum wine, and as a result, the young crow was soon on the road to recovery. अभी क्या हुआ करके एक दिन एक क्रो था, एक यंग क्रो, वो गिर गया था उसके नेस्ट से। वो फ्लटर कर रहा था रोड पे और इन डेंजर ऑफ बीइंग क्रश्ड बाय अ काट और टोंगा और सीज्ड बाय अ कैट। जब उसके ग्रैंडफादर थे उसने पिकअप किया उसको और घर पे लेके आए। उसने उसको इतना केयर किया, उन लोगों ने नहीं सोचा था करके हम लोग एक क्रो को घर पे रखेंगे, पर उसके ग्रैंडफादर ने बोला इसीलिए रख दिया। और फिर ग्रैंडफादर ने उसको खाना दिया, दूध दिया और ब्रेड दिया। उसके बाद वो थोड़ा ऑन द रोड ऑफ रिकवरी पे आया, मतलब वो हील होने चालू हो गया। ही वॉज ऑफर्ड हिज फ्रीडम बट ही डिड नॉट टेक इट। इंस्टेड ही मेड हिमसेल्फ एट होम इन द हाउस। मतलब उसने घर बनाया उन लोगों के घर में। उसको फ्रीडम नहीं चाहिए था, बाहर जाने के लिए उसको पसंद नहीं था। वो एक जंगल क्रो था, वो ऐसा इधर उधर का क्रो नहीं था, वो इसे जंगल क्रो था। ग्रैंड मदर आंट मेबल and even some of grandfather's pets objected, but there was no way of getting rid of the bird. He took over the administration of the house. We were not sure that he was male, but we called him Caesar. अभी एक क्रो का नाम उस लोग ने उनको नहीं पता था मेल है या फीमेल है, बट उसने उन लोग ने उसका नाम सीजर रख दिया। बिफोर लॉन्ग सीजर वॉज जॉइनिंग अस एट मील times. Besides finding his own grubs or beetles in the garden, he danced about on the dining table and gave us no peace until he had been given his small bowl of meat and soup and vegetables. अभी इधर दिया गया है कैसे वो सीजर था, उसको लाइक अभी बाकी सारे क्रो जो रहते हैं वो रस्ते पड़े खाना और वो सब कुछ खाते हैं, बीटल्स इंसेक्ट्स वो सब खाते हैं। पर ये जो क्रो था इसको वो सब खाने के बदले उसको टेबल पे हलचल मचा के वो खाना मांगता था बोल में। आप इधर देख सकते हैं कैसे, इसको रेवन भी कह सकते हैं, अभी इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। He danced about on the dining table and gave us no peace until he had been given his small bowl of meat and vegetable soup and vegetables. He was always restless, fidgeting about, investigating things. He would hop across a table to empty a matchbox of its content, or rip the daily paper to shreds, or overturn a vase of flowers, or tug at the tail of one of the dogs. इतना परेशान करता था वो डॉग, पर वो ऑथर क्या बताते हैं आगे वो देखते हैं। That crow will be the ruin of us, grumbled grandmother, picking marigolds off the carpet. Can't you keep him in a cage? We did try keeping Caesar in cage, but he was so angry and objected with such fierce cawing and flapping that it was better for our nerves and peace of mind to give him the run of the house. अभी वो सीजर जो था उसको एक पिंजरे के अंदर रख नहीं पाए, इसीलिए उसको छोड़ दिया। अभी क्या हुआ करके he did not show any inclination to join the other crows in the banyan tree. Grandmother said that
said this was because he was really a jungle crow, a raven of sorts, and probably felt a little contemptuous of very ordinary carrion crows. अभी जो नॉर्मल क्रोस रहते हैं इधर रास्ते पे और सब कुछ, उन लोगों को कैरियन क्रोस कहते हैं. जंगल क्रोस मतलब रेवन क्रोस. रेवन क्रोस नहीं, रेवन, और रेवन ऑफ सॉर्ट्स करके इधर दिया गया है, और इन लोगों को कैरियन क्रोस दिया है. बट इट सीम टू बी that Caesar, having grown used to living with humans on equal terms, had become snobbish and did not wish to mix with his own kind. He would even squabble and herald the hornbill. Piercing the top of Harold's cage, he would peck at the big bird's feet, whereupon Harold would swear and scold and try to catch Caesar through the bars. अभी इधर बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए गए हैं. इफ़ आपको उसमें कुछ डिफ़िकल्ट हुए तो प्लीज़ हम लोगों को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एक जो हमारा डिफ़िकल्ट वर्ड है वो है स्नॉबिश, फिर स्क्वैबल और पियर्सिंग, वो आपको पता है होगा, पियर्सिंग. अभी इसमें आपको और कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड आए तो प्लीज़ आप पूछिए. इन टाइम सीजर लर्न टू टॉक अ लिटल एज रेवेंस sometimes do in a cracked, throaty voice. He would sit for hours outside the window, banging on the glass with his beak and calling, "Hello, hello." He seemed to recognize the click of the gate when I came from school, and would come to the door with a hop, skip and jump, saying, "Hello, hello." I had also taught him to sit on my arm and say, "Kiss, kiss," while he placed his head gently against my mouth. अभी ये जो क्रो था उसको किसने सिखाया होगा ये हेलो हेलो बोलने के लिए और ये किस किस बोलने के लिए. गेस हाउ सीजर लर्नड हेलो हेलो. व्हाट इज मेंट बाय आंट मेबल नेवर वाज अ सक्सेस विद द पेट्स. कैन यू थिंक ऑफ द रीजंस व्हाई इज दैट सो. ये आपको दो क्वेश्चंस फाइंड करने के हैं. ऑन वन ऑफ आंट्स मेबल विजिट्स सीजर alighted on her arm and crackled, "Kiss, kiss." Aunt Mabel was delighted and possibly flattered, and leant forward for a kiss. But Caesar's attention shifted to my aunt's gleaming spectacles, and thrusting at them with his beak, he knocked them off. Aunt Mabel never was a success with the pets. Pet or pest? Grandmother insisted that Caesar was a pest. In spite of his engaging habits, इधर हम लोगों को बताया जा रहा है करके कैसे वो आंट मेबल का चश्मा तोड़ देता है जो कौवा था, और उस जो आंट मेबल रहती है वो पेट्स को पेस्ट बोलती है. हैड restricted his activities to her own house, it would not have been so bad, but he took to visiting neighboring houses and stealing pens and pencils, hair ribbons, combs, keys, shuttlecocks, toothbrushes, and false teeth. He was especially fond of toothbrushes and made a collection of them on top of the cupboard in my room. Most of the neighbors were represented in our house by a toothbrush. Toothbrush sales went up that year. So did grandmother's blood pressure. अभी टूथब्रश के चोरी होने की वजह से टूथब्रश का सेल बढ़ गया, मतलब लोग टूथब्रश खरीदने लगे, और वैसे ही टाइम में जो ग्रैंडमदर का ब्लड प्रेशर था वो भी बढ़ गया. Caesar spied on children going into the Bania's house and often managed to snatch sweets from them as they came out. Clothes pegs fascinated him. Neighbors would return from the bazaar to find their washing lying in the mud, and no sign of the pegs. These two found their way to the top of my cupboard. It was Caesar's gardening activities that finally led to disaster. He was helping himself to our neighbor's beans when a stick was flung at him, breaking his leg. I carried the unfortunate bird home, and grandfather and I washed and bandaged his leg as best we could, but if could not mend. Caesar hung his head and no longer talked.
He grew weaker day by day, refusing to eat. An occasional sip of grandmother's homemade wine was all that kept him going. अभी एक दिन क्या हुआ करके सीजर ने चुराया बीन्स, और तब बीन्स चुराते चुराते वो उसने जो डंडा रहता है उसने वो सीजर के ऊपर फेंका और वो उसको ही लग गया, और फिर वो बहुत यह उसको सिक हो गया, और फिर क्या हुआ, वो मर गया। इधर आपको दिखता है करके। वन मॉर्निंग आई फाउंड हिम डेड ऑन द सोफा, हिज लेग्स स्टिफ इन द एयर, पुअर सीजर। His antisocial habits had led to his early end. I dug a shallow grave in the garden and buried him there, along with all the toothbrushes and clothes pegs he had taken so much trouble to collect. ये इसका ऑथर कौन था? रस्किन बॉन्ड फ्रॉम ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। तो इधर मैं मेरा एक्सप्लेनेशन का वीडियो एंड कर रहा हूँ। इफ़ आपको इसका कुछ और हेल्प चाहिए, डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं तो ऐसा कुछ, तो प्लीज़ हम लोगों को बताइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग and stay tuned.